हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है सबके भाई लोग। मेरे को पता है थोड़ा लेट हुआ है 7-8 मिनट आने में, बट वो लेट मेरी वजह से हुआ है। बट वी हैव हाँ बट तो नाउ वी हैव अपने पास दो क्लब के रिप्रेजेंटेशन है, एंड वी हैव एथलेटिको मैड्रिड रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मेनेस इन द मॉन्क, और शायद यूट्यूब पे। मतलब मैंने आज तक बहुत बार बहुत पॉडकास्ट देखने की कोशिश की है। मैंने एथलेटिको मैड्रिड का रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा। तो परम को तो आप लोग सब लोग जानते हैं, बट लेट मी वेलकम प्रियांशु। प्रियांशु एथलेटिको इंडिया रिप्रेजेंटेटिव, और हम लोग बात करने वाले हैं आज के टाई के बारे में। थोड़ा डॉटमेंट पीएसवी भी बात करेंगे। प्रियांशु, हाउ आर यू डूइंग ब्रदर? Me. प्रियांशु, कैन यू I'm हियर all मी? good. Yeah. I'm all good. What about you? आई एम गुड ब्रदर, आई एम गुड ब्रदर। परम, क्या हाल चाल है भाई? कैसा लग रहा है तेरे को? हाउ आर मैं तो हाउ आर ठीक यू हूँ। फीलिंग? विल स्टार्ट। Uh, मैं तो ठीक हूँ निधि भाई. As always, it's a pleasure to join you. और yeah, just excited for the match. I'm sure Priyanshu is also excited. Can't wait. Not long to go, and yeah, super excited for the match. हाँ यार, इंटर वर्सेस एथलेटिको ये जब ड्रॉ हुआ था, तो ये जो दो टीम्स हैं, ड्रॉ होने से पहले इन दोनों Hmm. टीम्स को बहुत हद तक डार्क हॉर्स डार्क हॉर्स डार्क हॉर्स बोल रहा था पर्सनली। Hmm. बहुत सारे लोग इनको डार्क हॉर्स बोल रहे थे। पर्सनली मेरे को जहां तक इंटर मिलान की बात है ना यार, मेरे को Hmm. ना डार्क हॉर्स थोड़ा नॉट इंसल्टिंग, बट Hmm. आई फील दैट इट रिड्यूसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस इंटर मिलान साइड, क्योंकि स्कुडेटो विनर्स हैं एक बार फिर से। कितना 11 पॉइंट का लीड है, कितना 16 पॉइंट का Uh, लीड है, अभी राइट? सेकंड प्लेस से 16, थर्ड प्लेस से 17. हाँ, 16 पॉइंट का लीड है, राइट? सो मतलब रन अवे विनर्स, पिछले बार फाइनलिस्ट हैं। बट एथलेटिको इज अ बिग टेस्ट, एंड नाउ यू हैव गॉट टू ट्रैवल टू द वांडा मेट्रोपॉलिटानो भाई। Yeah. कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? देखो निधि भाई, आई थिंक हमारे व्यूज इस पे तो बहुत सिमिलर रहे कि रिगार्डलेस ऑफ द लीड, ये 1-0 लीड है सिर्फ, एक तो पहली बार है. ठीक है, सेकेंड हाफ में मिनिमम 2-0 जीत सकते थे, चांसेस वेस्ट हुए. बट क्या है ना, आई मीन मैं दोनों टीम्स के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देख रहा था, एंड सिमोने इंजागी सेड दिस कि ये 1-0 स्कोर लाइन है, बट हम लोग जो मेंटालिटी से खेलेंगे विल बी दैट ऑफ अ 0-0, जस्ट लाइक वी डिड एट पोर्टो. बिकॉज अगेन ही स्पोक अबाउट एटलेटिको मैड्रिड्स होम रिकॉर्ड. उन्होंने बोला कि वो सिर्फ एक गेम हारे, एंड दैट टू ही सेड कि दे डिडंट डिजर्व टू लूज दैट गेम व्हिच वाज टू एथलेटिक क्लब एट होम. और उन्होंने बोला कि अगर ये सब गेम उनके होम में होते तो दे वुड प्रोबेबली बी द ला लीगा लीडर्स, सो इवन फेडेरिको डिमार्को ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जस्ट लाइक हाउ द एटमॉस्फेयर वाज एट द मियाजा फॉर इंटर, वैसा इक्विवेलेंट होगा वांडा मेट्रोपॉलिटानो में. एक चीज है कि मैं बार बार ये गेम कंपेयर करता हूँ लास्ट सीजन के पोर्टो गेम को, और निधि भाई आपने कल पोर्टो को देखा होगा. ये ओवर द टू लेग्स आपने पोर्टो की एफर्ट देखी. वो बहुत टफ टीम थी खेलने को ड्रगाओ में जाना बहुत टफ है. तो दिस टीम ये एटमॉस्फेयर झेल चुकी है. आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एटलेटिको मैड्रिड एटमॉस्फेयर बाय एनी मींस, सो जस्ट सो दैट प्रियांशु डजंट गेट इट रॉन्ग. बट हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में खेल चुके हैं, मतलब रोमा, पोर्टो, यूवेंटस, मेनी क्लब्स टू नेम. अगेन दिस इज नॉट टू अंडरमाइन देम, पर आई फील ये टीम ने मेंटली एक लीप ली है कि टफ एटमॉस्फेयर में खेला जा सकता है. मतलब हम सिमोने इंजागी ने कल क्लियरली बोला कि हम अपना गेम खेलने को ट्राई करेंगे, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ जस्ट सिटिंग बैक. इफ यू डू दैट, Atletico Madrid पक्का गोल मारेगी, and they are a different side tactically now. They are not the old cholo team which you think of, which only sits back or anything. वो लोग अटैक भी करते. I mean the numbers are there to see. मोराता और ग्रियजमैन का फॉर्म, not just those two. आप रॉड्रिगो डेपॉल की फॉर्म का फॉर्म देखोगे, वो भी है. फिर रॉड्रिगो रिकेल में बहुत सारे प्लेयर्स है. सो आपको मतलब आई एम नॉट नर्वस पर से, आई एम ज्यादा एक्साइटेड, बिकॉज आई थिंक ये मैंने जैसे निधि भाई आपको ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये अगर हम लोग क्वालिफाई कर गए तो दिस इज अ कॉन्फर्मेशन प्रीटी मच फॉर मी दैट वी आर एक्चुअल कंटेंडर्स टू विन द चैंपियंस लीग. तो आई एम नॉट ईदर गेटिंग कैरिड अवे इधर. स्टिल ये मेरे लिए भी 50-50 टाई अभी भी है, बिकॉज इंटर का जो अवे रिकॉर्ड स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट है, इट्स टेरेबल. इन द लास्ट 10 गेम्स वी हैव वन 0 मैचेस, मतलब ड्रॉज या लॉसेस ही है. बट अगेन व्हाट्स डिफरेंट अबाउट दिस इंटर टीम, जो मैं बार बार बोलता हूँ, वी आर ब्रेकिंग ऑल दीज अनफेवरेबल रिकॉर्ड्स. तो I'm not overconfident or anything, but I have a good feeling in general कि हम लोग qualify कर सकते हैं इस टाइप से.
बिल्कुल यार। प्रियांशु एक बात बता यार, फर्स्ट लेग में एक तो यार सम पीपल आर आस्किंग कि व्हाई डज ही सपोर्ट एथलेटिको, सो उसका आंसर प्रियांशु जो देगा वो तो देगा, बट मैं एक चीज बोल देता हूँ, यू डोंट चूज द क्लब चूजेस यू। सो इसका कोई मतलब आंसर नहीं होता। व्हाई डू यू सपोर्ट रियल मैड्रिड? डू यू सपोर्ट देम बिकॉज दे विन मोर? तो मतलब व्हाई डू यू सपोर्ट लिवरपूल? इज इट बिकॉज हम लोग अभी रिसेंटली जीतना शुरू किए? सो इसका कोई आंसर नहीं होता यार, मतलब द क्लब चूजेस यू। देयर आर अ लॉट ऑफ Right. पीपल हु विल, राइट। वी हैड अ नेपोली फैन अभी कुछ दिन, वो पिछले सीजन नहीं बना नेपोली फैन, वो बहुत पहले से हाँ नेपोली फैन, right? हाँ So there are people that choose the clubs because of whatever. But Priyanshu यार क्या बोलता है, फर्स्ट लेग में तेरे हिसाब से गड़बड़ हो गया? डू यू थिंक कि मतलब what went wrong in the first leg according to you, or nothing went wrong? No, I won't say that कि कुछ गलत हुआ ही नहीं, because the thing is I pretty much relate to this game as the game we played in the 2022 season. Man City का against था, quarter final tie था. So we had the same thinking back then also, because वो सीजन में अभी जैसा इंटर मिलान का सीजन जा रहा है, मैन सिटी का भी सेम सीजन चल रहा था. They were Hmm. unbeaten in the new year up until then, and we went there and it was all going pretty good up until the same stage. वही 70th 60th मिनट ऑड का मार्क था, तभी हमने भी कंसीड किया था. आई स्टिल रिमेम्बर रेनाल्डो वाज आवर प्लेयर ऑफ द सीजन वो सीजन का, but he was the one who got nutmegged by a brilliant ball by De Bruyne, and then the हम्म, goal eventually. So वही अराउंड के स्टेज पे इधर भी खाया था हमने सैन सीरो में भी. सो मतलब अभी वो मैच देखते वक्त मेरे को अचानक से उसका फ्लैशबैक आया. ऐसे एटलेटिको के बहुत सारे चैंपियंस लीग मैच देखते देखते फ्लैशबैक्स आते हैं. जैसे हम्म, अपना लास्ट सीजन लेवरक्यूजन का अगेंस्ट करास्को का पेनल्टी मिस देख के मेरे को अपना 2014 का यूसीएल फाइनल याद आ गया, 2014-2016, जब ग्रीजमैन ने भी मिस किया था. सो ग्रीजमैन ऐसा वाला, बहुत, हाँ। हाँ, तो ऐसे बहुत रिलेटेबल चीजें फ्लैशबैक से आ जाती है इनके मैचेस देखते टाइम पे. बट ठीक है, अभी फैन है तो इतना तो झेल ही सकते हैं प्यार के लिए अपने. हाँ। So that is secondary, but I pretty much related to that game against Man City. हम्म, But अभी वो सीजन कैसा था, वो सीजन we weren't firing even at our home. So we were हाँ। terrible at home. We were terrible. We हम्म, just somehow made it out of our group stage. Pool जिसमें लिवरपूल था, फिर से हम्म, pool था उसमें, and then we somehow made it. We went to the Dragao. We got a 3-1 result, which was our best result that season, and हम्म, we somehow made it to the quarterfinals by defeating Manchester United, who were quite depleted that season. But then again, we came राइट। against Manchester City. Then at home, घर पे तो वही डुअल्स. मैच का एक ही मेमोरेबल चीज याद है मुझे वो मैच से, वो टाई से. दैट वाज सैविज पुलिंग ग्रिलिश का बाल खींच रहा था सैविज बार बार. वो वो एतिहाद में भी खींचा था, फिर अपना प्रियांशु मेट्रोपॉलिटन इज, में भी खींचा. हाँ। प्रियांशु का मेट्रोपॉलिटन. थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। प्रियांशु, यू आर ड्रिफ्टिंग इन एंड आउट। तेरा इंटरनेट इज नॉट द बेस्ट। ओके, बट टिल प्रियांशु फिगर्स दैट आउट, मैं परम yeah, से एक क्वेश्चन पूछता हूँ यार। हम्म, एथलेटिको मैड्रिड का ये सीजन, मतलब आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो चलो ठीक है, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब स्टाइल तो थोड़ा चेंज हुआ है। बट हम्म, यार मेरे को एक बात बता, आर यू एक्सपेक्टिंग, मैं पर्सनली अगर तू मेरे से पूछेगा ना, एज अ न्यूट्रल, एज एन हम्म, आउटसाइडर, मैं आज हाँ, एक्सपेक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग शेड्स ऑफ द ओल्ड एथलेटिको, मतलब फुल गुंडागर्दी होने वाला है आज। आई एम हाँ, एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फाउल्स, आई एम हम्म, एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ यू नो, वो प्ले को ब्रेकअप करने की कोशिश होती है ना, सेट पीसेस हम्म, वगैरह। आर यू एक्सपेक्टिंग, इफ दैट हैपेंस, हम्म. कैन इंटर मैच फायर विद फायर? यू थिंक वो कर पाएगा इंटर? वेरी गुड क्वेश्चन निधि भाई, बिकॉज ये जो मेरा मेन क्वेश्चन हेडिंग इनटू दिस एटलेटिको गेम क्या था ना, बिकॉज हम लोग बोलोनिया भी खेल चुके हैं अभी अवे, एंड हमने सेरिया पैनल पे बोलोनिया को डिस्कस किया हाउ टफ दैट वाज. मेरा मेन क्वेश्चन था कि कैन इंटर हैंडल बोलोनिया एंड एटलेटिको बैक टू बैक अवे फ्रॉम होम इन अ मैटर ऑफ 4 to 5 days अवे फ्रॉम होम. एंड the what I saw at Bologna, मेरे को एक sense of relief आया. To answer your question, I'll just tie into it, because the way we managed that game to beat Thiago Motta's team, the team we hadn't beaten so far this season. 3 meetings in total, एक ड्रॉ, एक विन उनके लिए और एक विन हमारे लिए. अभी फर्स्ट हाफ में गोल मारा, उसके बाद द वे वी सोक्ड प्रेशर,
while they were pressurizing, we just chose to not attack at all. Peak, since you mentioned peak Atletico old style, that is what we did to Bologna. We हाँ. just didn't care to attack with multiple rotations. उस गेम में 2 injuries भी हुई, Arnautovic और Augusto को, but still with the rotations, with the substitutions, we managed to defend only and got the result. And now why am I talking about this? क्योंकि I feel again ये mentality की बात है. अगर जो मैंने लास्ट सीजन देखा और जो मैं ये सीजन देख रहा हूँ, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन दिस टीम. नहीं भाई, मतलब players like Barella, who was getting red card against Real Madrid by punching Eder Militao. Since Jeetu Bhai is in the chat, he'll probably remember it. But ये maturity players में बढ़ गई है. Lautaro Martinez, मतलब he fluffs his lines in front of goal थोड़ा इधर उधर, but now he's scoring. जनरली प्लेयर्स ज्यादा मच्योर हो गए, तो आई थिंक इफ एटलेटिको वो पुराना वर्जन लाएगी अपना, इंटर कैन डू द सेम. इंटर हैव डन इट इन अ लॉट ऑफ गेम्स एक्चुअली दिस सीजन. यूवेंटस अवे, रोमा अवे, एटलांटा अवे, बहुत गेम में हम लोग ये एटीट्यूड के साथ टर्न अप हो चुके हैं, विच पीपल हैव नॉट लाइक, बट the game is the game. I mean, Bologna के against भी हमने ऐसे ही किया, wherein Thiago Motta was so angry that in the post match conference he said कि last 5 minutes में तो football खेला ही नहीं गया. But I mean, come on man, every team does this. So तो I'm not, again, mentality wise भी मैं इतना worried नहीं हूँ. मेरे लिए ज्यादा है ना निधि भाई, इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग दैट एटलेटिको मैड्रिड आर अ गुड साइड. दैट्स माय मेन ऑब्स्टिकल, Yeah. हर्डल, or the thing to acknowledge about them. I think Inter have the weakness only we have is our backup strikers. Arnautovic ठीक है, he's injured. Alexis Sanchez का luckily form वापस आ गया, so that is one thing, less thing to worry about. But I feel मेरे इंटर के एंड से मैं ज्यादा वरीड नहीं हूँ. आई थिंक मेंटालिटी बराबर है. इट्स जस्ट दैट आई कैन नॉट लुक पास्ट एटलेटिको मैड्रिड्स फॉर्म. और अगर निधि भाई ये दिस क्लैश इज बीइंग बिल्ड एज वन थिंग, दिस perfect Atletico home form wherein they only have one loss, wherein the perfect away team who have just not lost a single game away from home, and so far in 2024 even Inter have won all games actually. So uh, yeah, I mean, I have every reason to be optimistic. It's just that I cannot take Atletico Madrid lightly in general. That's it. प्रियांशु, तेरे को मतलब आर यू एक्सपेक्टिंग क्लासिक चोलो, मतलब क्लासिक चोलो डिफेंस कि मतलब ब्रेकअप प्ले, तोड़ो उनको, तोड़ो मतलब फिजिकली भी, और ब्रेक डाउन एवरी अटैक, काउंटर कॉर्नर्स को, गोलकीपर को घेरो. डू यू एक्सपेक्ट, बिकॉज एथलेटिको इस सीजन अलग खेला है, सो डू यू एक्सपेक्ट एथलेटिको टू प्ले लाइक दैट, और तेरे को लगता है कि नहीं एथलेटिको विल, और डू यू थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू प्ले? तेरे हिसाब से अप्रोच क्या होगा आज? सी सेम चीज फिर से बोल रहा हूँ थोड़ा, कि मैन सिटी के गेम को भी यही सेम हुआ था. सो वो टाइम पे द थिंग वाज, प्री गेम आई वाज देयर ऑन लाइव विद अर्पित भाई ऑन सोनी. सो लाइव था वो टाइम पे उनके साथ. एंड द थिंग वाज कि आई सेड द सेम थिंग दैट we'll see a typical Cholo today. What he will do is we'll score early and then we'll sit back completely and take the game deep into penalties, wherein it's anyone's game. So, but वो हुआ नहीं उस दिन. But we played good. Home game था City का against, we challenged them quite well. We had good attacks. But unfortunately उस दिन पता नहीं एडरसन का short stopping इतना अच्छा कैसे हो गया. Otherwise he's quite shit. No offense to any Man City fan out there. But Thank you. यही कि we could not play that typical Cholo style game. But coming into this game, I think the thing is, ये game ना अभी 80-20 है. 80-20 because इंटर पहली बात तो अनबीटन है ये साल. हाँ, अनबीटन है ये साल इंटर, पहली बात. अवे फ्रॉम होम हारा नहीं है ये साल अभी भी. प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं, and they have some top quality defenders. They have Bastoni in there, they have De Vrij in there, they have Acerbi in there. मतलब ये तीन तो ऐसे पहाड़ जैसे खड़े हैं आपके पीछे. मतलब आप मुड़ोगे तो देखोगे क्या, पहाड़ खड़ा है आपके पीछे. And the thing is, मोराटा को छुओ तो मोराटा is down. He gets scattered on the floor. And the thing is, we needed a physical striker who's quite physical enough, and we don't have that. Neither is Korea physical, neither is Depay physical. Depay का तो छोड़ ही दो. एक गेम अच्छा खेलेगा, अगले दिन आपको न्यूज आएगा ट्रेनिंग में इंजर्ड हो गया है. सो इट्स दैट द केस फॉर आवर स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट as far as striking is concerned. The only positives that we have is we are unbeaten at home for a very long time.
La Liga और UCL दोनों में, and we have defeated Real Madrid at home. I hope Jitu bhai is watching and he does not scold me after this. But खेला है home पे Real Madrid को जब हराया है 3-1, so I think we can get a result. But again वही चीज है. The second positive I am talking about is Griezmann coming back, and largely he has been our carrier from the past season or two. He has carried our hopes, and I feel that he will again be our carrier of hope. And I feel that somehow down the line this could be Marcos Llorente's night. I somehow feel that because he is a player whenever we are in adversity, whenever we lack someone, some proficient attacker up front, he goes there and delivers. And since I'm talking about Llorente, mention करूंगा कि अभी कुछ एक दो दिन पहले ही वो it has been some 4 years to that Liverpool game away at Anfield, 2000 wherein 4 years. 4 years, wherein Marcos Llorente came on and changed the game completely for us. Up until then, it was Oblak keeping us in. Yep. But again, as you had mentioned, as you had asked me that I feel कि कौन सा स्टाइल इम्प्लीमेंट करेगा चोलो, सो स्टाइल तो आई फील कि ऐसा इम्प्लीमेंट करे जिससे बात बन जाए एट द एंड ऑफ द डे. बाकी कुछ भी करे, कैसे भी निकाले एट द एंड ऑफ द डे, इवन इफ वी स्कोर 2 goals and we sit back, we put even 8 players inside the box and defend for our lives, and at the end of the day we are winning the tie. I'm really okay with that. राइट, ऑफ कोर्स. रामाधीर भाई, मैं नहीं पानी वेस्ट करूंगा सर, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको. मैं खुद परेशान हूं पानी की कमी से. आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर वेस्ट वाटर. मैं बस पी रहा हूं. तो पीना तो जरूरी है, पानी क्या कर सकते हैं. बट यार डेफिनेटली यार मनीष, इट इज गुड फॉर लिवरपूल दैट आर्सेनल एंड सिटी आर मूविंग फॉरवर्ड. मैं तो चाहता हूँ सेमीफाइनल में दोनों खेलें एक साथ. बट वो हम लिवरपूल की जब बात करेंगे तो देन वी विल डिस्कस इट. बट आई वांट टू टॉक अबाउट 2 प्लेयर्स यार. और मतलब अंडररेटेड शायद आप बोल सकते हो, बिकॉज ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है. बट दैट्स बिकॉज सोशल मीडिया टिपिकली, और एटलीस्ट इफ यू लुक एट यूट्यूब, द स्पेस, यूट्यूब इज primarily dominated by Premier League and Premier League and La Liga fans, right? But दो प्लेयर हैं. एक तो मेरे को लगता है Lautaro Martinez right now is the best striker in the world. I personally feel, along with Harry Kane, right? ये I personally feel. और दूसरा प्लेयर जिसको मेरे को ऐसा लगता है कि he gets his credit but not as much is Antoine Griezmann, right? आई पर्सनली, मेरे को लगता है कि एथलेटिको का भैया, मतलब जो भी आज चांस आने वाला है, और देखो 2 गोल तो एथलेटिको को मिनिमम मारने पड़ेंगे. तो डिफेंस की बात इतनी हो रही है कि कैसे डिफेंड करेंगे और कैसे तोड़ेंगे हम लोग इंटर मिलान को. लेकिन मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इज फॉर एथलेटिको इज गोइंग टू बी ग्रीजमैन. सो आई लास्ट बोथ ऑफ यू परम, आई लास्ट यू, ग्रीजमैन को कैसे काउंटर करोगे राइट नाउ, बिकॉज ही इज ऑन फायर. एंड सिमिलरली प्रियांशु, Lautaro Martinez will create problems. He will 100%, right? So whoever wants to speak first. Do you want to go, Priyanshu, or should I? Yeah, sure, you go first. तो नीडी भाई, बिफोर आई गेट टू दिस, आई थिंक मैंने लास्ट क्वेश्चन के आपके बहुत मेंटालिटी की बात की, तो आई जस्ट गिव वन टैक्टिकल एलिमेंट टू एज टू हाउ वी कैन फेस अ प्राइम एटलेटिको मैड्रिड इफ दैट इज द एटलेटी शो. पहले जस्ट ब्रीफली बोलना चाहता हूँ कि ये इंटर टीम अगेन पोजिशनली और रोल वाइज जो प्लेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. Bastoni, again, he can go out, he can play in, Mkhitaryan can go out wide. बहुत वर्सेटिलिटी है इस टीम में लो ब्लॉक टीम्स को ब्रेक करने के लिए, प्लस टीम्स दैट प्रेस हाई. तो इसलिए मुझे उस एंड से थोड़ा कॉन्फिडेंस तो जरूर आता है. जस्ट टू वेरी ब्रीफली आंसर दैट, और नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नीडी भाई, कि ग्रीजमैन को कैसे काउंटर करें. नाउ अगर आप पहला लेग भी देखोगे, Griezmann was the main person who was neutralized, इसलिए I feel we could play our game the way we wanted. For the most part अगर आप देखोगे, वो midfield battle बहुत deadlock था. I mean, Çalhanoğlu versus Depol, Barella, Mkhitaryan moving up and down constantly, और Bastoni ने बहुत alterations की थे, और डार्मियान ने उस गेम में, जिसकी वजह से Griezmann पे constantly they were stepping up whenever he was about to receive the ball and dispossessing him. तो वो की है मेरे हिसाब से. ग्रीजमैन को फिर से काउंटर करने के लिए आपको राइट लेवल ऑफ फिजिकलिटी दिखानी पड़ेगी और एक स्पेस का अवेयरनेस. नाउ अब मैं जब
predicted lineups देखता हूँ कि Denzel Dumfries is the one going to start at right wing back instead of Darmian. उधर थोड़ा मुझे मेरा I feel a bit uneasy because as good as Denzel Dumfries has been, this is probably his best season with Inter. वो डार्मियन जितना इंटेलिजेंट नहीं है एट रीडिंग स्पेसेस अराउंड हिम. वो थोड़ा कभी हाई प्रेस कर देगा तो ही माइट नॉट सी द प्लेयर रनिंग इन बिहाइंड हिम, एंड बाय द टाइम ही गोज टू मार्क दैट प्लेयर एरर हो चुका होता है. यही यूवेंटस अवे गेम में हुआ था व्हेन वी ड्रू टू देम. सो दैट इज माय मेन वरी कि अगर आप ग्रियजमैन को टारगेट करना चाहते हो, in my opinion, if I'm Simone Inzaghi, you put all high IQ players in there. Matteo Darmian, ठीक है, वो he's not anywhere close to what he was at Manchester United. Those are long gone days. मतलब his level has gone up. He's very intelligent and everything. तो मेरे हिसाब से what you do to stop Griezmann is, again, you employ a low block slightly and then you step up on him wherever you can. Because that first leg, मुझे clearly याद है how every 1v1 duel against Griezmann was being won, and then eventually, unfortunately, he got injured. When Carlos Augusto came on and physically एक दो tackle किया, unfortunately he got injured, and this is the first time he's going to play since then. So मेरे लिए वही है कि आप वो रेकलेस टैकल अवॉइड करो जो डुम्फ्रीज से होता है. दैट इज एग्जैक्टली माय प्रॉब्लम व्हेन आई सी डेंजल डुम्फ्रीज इन द लाइनअप. ही इज नॉट द ही वो लीडर है, ही इज वेरी एंथुसियास्टिक, ही इज हैविंग अ गुड सीजन, वेरी हार्ड वर्किंग बट नॉट इंटेलिजेंट. दैट्स माय प्रॉब्लम. And if you're starting Benjamin Pavard as at right center back, Pavard again has a good connection with Darmian, a better connection with Darmian than Denzel Dumfries. तो मेरा ये सब बोलने का पॉइंट है कि आपके जो प्लेयर की फेमिलियरिटी है लाइनअप में, ऑल्टरेशंस जो होती है, बिकॉज इंटर इज सच अ फ्लेक्सिबल साइड, आप पहले वो फेमिलियर प्लेयर स्टार्ट करो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग प्लेयर्स लाइक डेंजल डुम्फ्रीज. दैट इज माय इशू ओवर हियर. आई फील अगर डार्मियन स्टार्ट करेगा आई विल बी लेस वरीड, बिकॉज मुझे पता है डार्मियन को आप राइट विंग बैक पे भेजो, उसको लेफ्ट पे भेजो, वो 5 प्लेयर पोजीशन डिफेंस पे कहीं भी खेल सकता है, मुझे वो टेंशन नहीं है. वो डुम्फ्रीज नहीं कर सकता है, वो स्पेस रखेगा. एंड आप ग्रियजमैन जैसे प्लेयर को, सॉरी यार, आप स्पेस नहीं दे सकते. फर्स्ट गेम में उसको स्पेस नहीं मिली इसलिए तो वो कुछ कर नहीं पाया था. और ठीक है, मुराता भी नहीं था तो उसके पास वो लिंकअप, मुराता केम ऑन एज अ सब, आई मीन, इसलिए उसका आधा गेम उसमें ही गया. बट आई स्टिल फील कि द मेन वे टू स्टॉप हिम इज आप थोड़ा लो ब्लॉक एम्प्लॉय करो. आप उस पे डोंट नीड टू मैन मार्क हिम, अदरवाइज आई थिंक ही कैन टेक यू फॉर अ राइड. जस्ट कीप एन अटेंशन ऑन हिम, स्टेप अप व्हेन नीडेड. यू हैव फिजिकल प्लेयर्स. माय मेन पेट पीप, जैसे मैं रिपीट करूंगा, इज डेंजल डुम्फ्रीज स्टार्टिंग, नथिंग एल्स. एंड आई थिंक दैट्स हाउ, with the intelligence of other players using their physicality, stepping up at the right moment, he can be neutralized as he was in the first leg. Priyanshu, main threat Lautaro, would you say? और मतलब expect कर रहे हो तुम वो कि you think some the threat comes from somewhere else? We managed Lautaro pretty well in the away game, San Siro mein. We did not give him, that much of chances, apart from one or two errors wherein he got behind the defense, but eventually he wasted those chances. But anyways, someone rightly said that he is having a Ballon d'Or type of season. I feel that even Griezmann is having that kind of a season. ट्रॉफीज अब तक आई नहीं है. कोपा डेल रे एक चांस था, बट वी कुड नॉट डू दैट. अगेन ग्रीजमैन मिसिंग था सेकंड लेग में, एंड एज परम rightly mentioned that we did not deserve to lose that game when we were at home. A reckless penalty give away किया था, फिर लास्ट में एक पेनल्टी मिला था which was overturned. So anyways, bygones are bygones now. ट्रॉफी नहीं आया अब तक, but this is still a competition where we are alive. We still have 90 minutes to fight for our fate, and even Griezmann having a Ballon d'Or season, so I hope that he does. But coming to the point कि Lautaro को कैसे neutralize करना, I think that us coming away from the San Siro, from taking just 1-0, 1-0 का deficit लेकर आ रहे हैं बस. So that is something which is quite good on our part, because I expected Inter to at least every pundit on that day, they were, bare minimum it was 2-1 in favor of Inter. उससे ज्यादा no one was giving a slash to Atletico. सब बोल रहे थे कोई 2-0, कोई 3-0. I guess Terry Phelan ने, I was watching the pre-show that day. Manas bhai was there again with Terry Phelan and everyone. So Terry Phelan had said that 4-0. And I was like, क्या बकवास कर रहा है भाई तू, कुछ भी. So I was like कि 4-0 भाई, 4-0, okay. इतने भी फुद्दू नहीं है हम लोग, इतने भी फुद्दू नहीं है. We know how to play. So still coming away with a 1-0 result gives us hope.
एंड लॉटारो को जैसे वो गेम में टैकल किया था, आई थिंक दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हिमेनेस था वो गेम में, एंड हिमेनेस हैज बीन अ डिफेंडर दिस सीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जितना भी खेला है, अगेन ही इज अनदर इंजरी प्रोन प्लेयर, बट जितना भी खेला है, he has been our man. He is good aerially. He negotiated every aerial threat that game was there, and Inter barely had a sniff from any aerial chances that they had created, because they have really good players who can attack aerially. But Jimenez neutralized all those chances, and if I'm not wrong, I saw that he's in the game day squad, also match day squad. So if he starts, then I think that Lautaro threat is pretty much negotiated over there. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, पर लाइक ऑब्वियसली वी नो दैट कि होजे मारिया हिमेनेज इंजर्ड है इस गेम के लिए, और आई थिंक उधर एक मे बी एटलेटिको को डिसएडवांटेज है, बिकॉज मेरे ओपिनियन में एटलेटिको का डिफेंस इज मेनली गुड व्हेन दे आर कॉम्पैक्ट. अगर आप इनको आइसोलेट करो तो द डिफेंस टेंड्स टू गेट आप इनके डिफेंडर्स को 1v1 टर्न कर सकते हो. फॉर एग्जांपल स्टेफान सावेज बहुत रेकलेस प्लेयर है, प्रियांशु विल ऑब्वियसली नो अबाउट इट, वो रेड कार्ड ले सकता है, उसको बीट करना आसान है. सो आई थिंक एक एज इंटर को कहां मिल सकता है, वेयर लॉटारो हैज टू कैपिटलाइज इफ सच अपॉर्चुनिटीज कम इन, एंड इवन मार्कस थुराम, नॉट जस्ट लॉटारो, कि अगर वो ओपनिंग आई, और चांसेस है बिकॉज दे नीड द गोल आफ्टर ऑल. आई मीन इट्स एज सिंपल एज दैट. उनको पुश थोड़ा तो करना पड़ेगा, और इंटर का एक मेन वेपन है उनकी ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ प्लेयर्स लाइक थुराम, डी मार्को, मिकिटारियन. तो आई फील मेरे लिए उनके सेंटर बैक्स को, ठीक है वो लोग करेंगे 5 एट द बैक जो भी है, बट व्हेन देयर सेंटर बैक्स गेट आइसोलेटेड, अगर आप वो फर्स्ट लेग की तरह चांसेस वेस्ट करोगे तो आपको लगेगा, आई मीन इट विल हर्ट यू. तो जो भी चांसेस प्रेजेंट होंगी, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, थुराम एंड लाउतारो हैव टू स्कोर. अगर आप सैविज को 1v1 डाल सकते हो, आपको करना पड़ेगा उसको टारगेट. दैट्स the main way you can get at them tonight, because they are going to be that extra pumped up to do things the right way. अगर आप चोलो की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखोगे, उसको पूछा था कल की व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर द फैंस, उसने बोला आई डोंट हैव एनी मैसेज, आई विल लेट द फैंस गिव द सपोर्ट फॉर द टीम. उसने बोला कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट द टीम ईदर, आई एम जस्ट fully trusting them for the night. So you already know they're going to be that extra pumped up to do things the right way, even if the defense is not that great quality. तो मेरा पॉइंट है बोलने का कि अगर इंटर को मिनिमल अपॉर्चुनिटीज आए, लॉटारो मार्टिनेज ने जैसे वो गोल पे कैपिटलाइज किया हुआ एरर पे जो मिसकम्युनिकेशन हुआ फर्स्ट लेग में, ठीक है उसने गोल नहीं मारा, बट बिकॉज ऑफ हिज प्रेस इवेंचुअली गोल आया कैसे तो करके. सो इन माय ओपिनियन वही आप बस अटेंटिव रहो, एरर्स को कैपिटलाइज करो जैसे आपने पूरे सीजन में किया है. बेसिकली सेम मेंटालिटी जो कल डी मार्को ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जो मेंटालिटी हमने दिखाई है वही मेंटालिटी के साथ जाओगे तो we should be progressing. Manav says Lautaro doesn't need to have a lot of ball at times. If Thuram makes and the run in behind, the wing back stretch the width, he gets space in between the lines where he's the most dangerous. हाँ ये True. सॉरी बोलना. No, आपको बोलना निधि भाई, आप बोल दीजिएगा. नहीं, if you don't mind, can I touch up? Yes, sure, please. Sure. So the thing is, Lautaro doesn't need space to have a lot of the ball at times. If Thuram makes and the run in behind and wing back stretch the width, he gets space in between the lines where he is the most dangerous. Yeah, I think Thuram का pace away में भी trouble किया था away game में. He came close on quite some occasions. It was Oblak's brilliance at times that denied him, and I think that wing backs. We basically, don't play those traditional right backs, left backs, since the 5 at the back system has come in. It's Lino as our left wing back, and Llorente slots in as a right wing back at times, or else it's Molina. So I think that the main problem arises over here only, and this is where I differ with Cholo, because I feel that traditional flat 4 at the back, wherein you have good 2 center backs who are good aerially, and you have got 2 proper right back and left back, wherein we have Renildo as our left back and Molina as our proper right back. That also does one thing. Ki Llorente gets to play up front. He gets to play that advanced role wherein he is quite dangerous and quite deadly, and he has proven that many at times. But given the fact that now we are playing 5 at the back, and we have got that Thuram factor and also some other pacey players that Inter possesses, I feel that we first of all should not start Savage, because we have got that license of Gabriel Paulista. And the thing about Paulista is we lost recently 2-0 away to Cadiz.
And you might be shocked why I'm taking this as a positive, because after the Cadiz game, I got to know that Paulista was the one who, after the full time whistle, was the first to reach the dressing room, and he was, very animated, and he was like pissed off, like he had, committed a heinous crime, and he wanted to make up for that, and I feel that that is something which will keep him pumped up for tonight's game. So obviously, the first thing first, Paulista over Savage, and he will be a center back. Then I personally want Renildo and Hermoso to be alongside them, because they both are, not your traditional center backs. They are convertible ones who can play on the flanks also. So they have that pace, who, Renildo and Hermoso can very much counter the pace which, Inter possesses. So I want them as the center backs along with Paulista first of all, and then I would like to see Molina again as the right wing back, and on the left hand side we will definitely start with Lino. That is for sure, because he has seen something in him, and I don't know what, but he will start with Lino on the left wing back, and I want, Molina right पे खेले, so that, Llorente center में खेल पाए, because I don't want to see Saul anywhere close, to even the touch line, कि मतलब ऐसा वार्म अप कर रहे आने के लिए, वो टाइम पे भी मेरे को देखना नहीं है साउल को, because he has been of that level this season. But given the fact he has been a stalwart for us, but अभी ऐसा हाल है, so you can't do anything about it. Truth is truth. You have to say that, and that is the reason why I want Llorente, De Paul, and for sure Koke को start करवाएगा, कितना भी बूढ़ा हो जाए. So Koke will for sure start. He is a club captain, but he is quite slow on the ball again. And the thing we lack every game is that pace in the midfield, wherein we only have De Paul, who does that. He runs to the pace, space and goes forward. But then again, उसका final ball बहुत lack है. I don't know Argentina कैसे start करवाती है उसको, but somehow he plays good for Argentina. Maybe that Messi factor है उधर. But again, given the fact that Koke is too slow, I want De Paul and Llorente to be in the midfield this time around. Given the fact that Barrios is just coming off injury layoff, and he will come on in the second half. But up until then, first half में ऐसा game हाथ से नहीं जाना चाहिए. At least keep it compact up until the first half. If not so, I personally want them to score a goal before the 30th minute mark, because there's also a start this season that कि जितने भी games home पे 30th minute से पहले score किए हैं, वो we have gone on to win comprehensively at the end. कि मतलब ऐसा clean sheet रख के जीत गए 2-0 3-0, ऐसा 4-0 5-0 wins भी आया ये season घर पे. तो so वैसा compact रखना चाहिए either first half में, or else first 30 minutes में एक goal मारो, get the tie back to level terms, and then let's play the game. इंटर तुम खेलो, थोड़ा हम खेलते हैं, ऐसा वैसा. यार आधा घंटा हो गया है, मैंने अभी तक बोला नहीं है, तो 300 लोग हमको देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, whoever is watching. एथलेटी इंडिया और इंटर इंडिया दोनों के इंस्टाग्राम लिंक्स मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो दोनों को जाके फॉलो करो यार. We will try to put out a lot more content rather than just Premier League and just Real Madrid, Barcelona. वो हमारा एम है, तो हम वो कोशिश करते रहेंगे. Shubham says Menace in the Monk are my favorite content creators. Thank you, Shubham. That's really sweet of you. But एक क्वेश्चन मेरा तुम दोनों से है. ये मैच ना बहुत अलग अलग रीजन से बहुत अलग अलग इंपॉर्टेंट है. इंटर मिलान के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि पिछले बार फाइनल में हारे थे, बहुत अच्छा खेल के हारे थे. एथलेटिको का मतलब चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन तो चलो हो जाएगा, मतलब पिछले सीजन एक तरह से बहुत लोग बोल रहे थे कि क्या ये फाइनली दिस द सीजन वेयर डिएगो सिमियोने को फाइनली बाय बाय बोलने का टाइम आ गया. बट सिमियोने हैज गॉन एंड रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ. ला लीगा टाइटल रेस तो मतलब टाइटल रेस में तो खैर इस सीजन एथलेटिको नहीं है, बट इंटर के लिए किसके लिए स्टेक ज्यादा है तेरे हिसाब से? मतलब आई नो बोथ ऑफ यू विल से कि हमारे टीम के लिए स्टेक ज्यादा है, बट what do you feel like? मतलब I'll start with Priyanshu, how far are you expecting, like कहां तक ये टीम आ जाए? क्योंकि I think you'll agree with me कि ला लीगा में तो चांस नहीं है, मगर ये एथलेटिको कहां तक जाएगी, तो एज अ फैन you'll say कि नहीं, it was a good season. See, अभी ला लीगा ट्रायम्फ के बाद 2020 सीजन के बाद से अब तक एक ट्रॉफी आया नहीं है, which is quite sad on our part given the stature of the club we have become now. सिमियोने नहीं बनाया at the end of the day, यहाँ पे हम उसके वजह से ही है.
Big credit Uh-huh. due to him. But the thing is, I feel even Param will agree somewhere down the line because they have already sealed Serie A. To be very honest, Inter have sealed Serie A and they are the runaway leaders. तो अब तक मेरे हिसाब से बुंडेसलीगा और सेरिया हैव बीन डिसाइडेड कंप्लीटली. ला लीगा भी Mm-hmm. डिसाइड हो सकता है अगले 2-3 गेम वीक्स में बिकॉज Mm-hmm. रियल मैड्रिड इज पुलिंग अवे and Barca are in the race again catching up to them, but still they have played a game more and are still 5-6 points behind. So Real Madrid can pull away 8-9 points. So अब तक तो इंटर का एक टाइटल has been more or less confirmed. But they are a team who have been consistently winning titles. हर सीजन कुछ ना कुछ कैसे भी कहीं से भी जीत रहे हैं. कोपा इटालिया हो गया आपका, देन आपका स्कूडेटो हो गया, देन अगेन वो लोग का सुपर कोपा इटालिया भी है शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट स्पेलिंग इट रॉन्ग. सो कहीं ना कहीं से एक ट्रॉफी आ ही जाता है. बट on our part is we are going trophyless for a lot of seasons, and that is giving the chance to various other teams to and other fans to show us down की भाई देखो तुम्हारा क्या हाल है, फिर भी तुम ऐसा बड़े जगह पे you're coming to sit all with the big daddies of the of the arena. तुम्हारी ये क्या है, औकात क्या है, वगैरह वगैरह. So there is a lot of things which is going on behind the scenes which we have as a fan we have to hear because our team is not doing anything much on the field. So that's a sad part. But Hmm. stakes are quite high for us because Hmm. I feel कि home में ऐसा form है, so why not push for that UCL title? Because and from now we are going to play at least one game at our home up until the semi-finals. That is for sure. And you have that 190 minutes wherein you can compensate for the entire 90 minutes that you played away from. So वो 90 minutes Mhm. तुम्हारे पास है, तो why become complacent and just say at the end of the day कि no यार, सामने मैन सिटी है, सामने बायर्न है, वो लोग ऐसा बहुत बड़े टीम है, यूसीएल जीत चुके हैं पहले. हाँ, इंटर अनबीटन है ये साल यार, कैसे हराएंगे. So I don't want that as a reason at the end of the day. I just want my team to go out there and घर पे खेल रहे हैं where we have that Mhm. record, we have that solidity. So why not push for that UCL title which has eluded us for such a long time. I know many people, obviously I can't read all the comments. You might be getting to read that, but a lot of people might be thinking क्या बोल रहा है. But this is something which your club does to you. At the end of the day, it's passion for the club, You and have to. I अरे but Yeah, yeah, हाँ. yeah, You but don't have to. You don't have to justify that. Of course, you'll back your yeah, club. उसमें exactly. क्या Yeah, problem? वही. हाँ. yeah. So the thing is that only कि अभी आपका होम पे ऐसा फॉर्म चल रहा है. So when the Hmm. stakes are high, when the fans are behind you, why become complacent and let the other team dominate you and get away? Because what the thing that happened in that Athletic Club game, I was pretty sure, and that was a pretty late kickoff. To be honest, 2:30 का kickoff है. So I could not watch Hmm. the complete game as the next day I had to be somewhere. Hmm. सो वो मैंने गेम जो है मैंने 20th मिनट के मार्क तक देखा था वो गेम. एंड तब तक वी आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग एथलेटिक क्लब. आई फेल्ट लाइक अभी सो जाता हूँ, सुबह उठ के जब रिजल्ट चेक करूंगा, सो इट माइट बी 2-0 3-0 इन फेवर ऑफ एथलेटिक. सो व्हेन आई वोक अप, आई जस्ट took my mobile, turned it on, and the first notification that I received was from Footmob, or I guess Flash Score. I get these notifications on. So Uh-huh. it was the full-time score: Athletic Club 1, Atletico Madrid nil. So I was quite shocked. But then when I checked the stats, I saw how many big chances we missed, how many chances we had created, how many easy chances we had missed that game. And at the end of the day, जब वो last का वो मैंने notification देखा penalty वाला, and I saw that penalty given to Atletico Madrid, मेरे को पहले तो लगा कि मिस क्या रहेगा, क्योंकि ये तो Hmm. एथलेटिक डीएनए में है कि पेनल्टी मिस करोगे ही करोगे तुम सीजन में, एक नहीं तो दो. सो आई फेल्ट Hmm. दैट कि मिस क्या रहेगा फिर से, बट नहीं, पेनल्टी मिस नहीं किया, दैट गॉट ओवरटर्न. So that is again something which happened very bad to us, and this is something now where I will tell you to you Nidhi bhai and Param, Hmm. I will tell you to that we become very complacent at times, given the fact that we are playing at home, and we have won many games barely also at home, which is just by the 2-1 scoreline or 1-0 scoreline, wherein we looked very attacking at the start, very good for 30 minutes. Then after the 30 minutes, we are absolutely flat.
पूरा गेम फ्लैट थे. उसके बाद सेम हैपेंड अगेंस्ट बेटिस, वी बेयरली मैनेज टू विन दैट गेम. सो ये चीजें कंप्लेसेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, चांसेस मिस करने रहते हैं इजी. मोराटा आधे से ज्यादा टाइम ऑफसाइड रहता है, उसके लिए तो मतलब ऐसा रेफ जैसे रन बनाते देखे पहले ही फ्लैग उठा देता है, क्योंकि रेफ को पता है कि ऑफसाइड रहेगा लौंडा. सो ऐसा हाल है उसका. तो बट still he has scored a lot of goals this season. Exactly. Yeah, so पता नहीं ऑफसाइड नहीं रहता तो बंदा कितने स्कोर्स कर लेता ये सीजन. बट that is again a secondary thing. The main thing is complacent नहीं होना है, and the stakes are pretty much high for us. And if we don't win tonight, then I don't know कि अगले कुछ सीजन्स में मतलब क्या होगा, because I feel that the time is coming, very close for us to bid goodbye to some of our former players, who have been अमोक बोल रहा है अमोक बोल रहा है मोराटा bleeds offside. Jesus. So by touching up to my point, I will just finish. Just Yeah, sure. Take your time. Yeah, so I was just telling that कि भाई बंदा कितना स्कोर कर लेता अगर ऑफसाइड नहीं रहता तो. बट एट द एंड ऑफ द डे स्टेक्स आर हाई फॉर अस, because if we don't win anything now, then I don't know when we'll win something, because it's coming to an end for many of our stalwart players, as I mentioned. Savage has become very error prone. Again, Koke has become very slow. Saul का ball retention बिल्कुल नहीं है. They can't create that pace in the game which is needed when you are down a goal or something like that. So ये stalwarts का खत्म, मतलब रास्ता खत्म होने आ रहा है. And I'm not very sure about DePaul and some other Argentine players. I'm never sure about any Argentine player, to be very honest. I'm very doubtful of Argentines, and I was very doubtful of Cholo a season or two. मैं वही बोलने वाला था कि मैनेजर आपका या सो हाँ, अभी जो है वो है आपके सामने है. जितने भी अर्जेंटाइन प्लेयर्स हैं at our club, they haven't contributed largely to our success at any time. It has been, our legend has been Paulo Futre, Portuguese. फिर से मैनेजर में ही बस अर्जेंटाइन है डिएगो सिमेने जो चले आ रहा है. बाकी प्लेयर्स में तो कोरिया एट टाइम्स कर लेता है, एट टाइम्स वो भी जब उसका मन करे तो, और इवन वो भी फ्लैट है. सो यही, आई डोंट ट्रस्ट दीज डेपॉल्स एंड एवरीवन. The only hope that I have is on our youngsters. And Griezmann जब तक खींच रहा है भाई, खींच ले, हाथ जोड़ रहा हो भाई और खेल ले, 10 साल चलेगा. खींचते रहे ऐसे जैसे खींच रहे हैं. So I have trust on our younger players. बाकी उनको छोड़ के इन पे कुछ ट्रस्ट है नहीं, इसलिए I want somehow कि जाने से पहले एक लास्ट स्पैन सॉन्ग हो जाए, एक भाई चलो भाई जीतते हैं UCL फाइनली, खून खोले इनके अंदर का कुछ तो. So okay. एक कमेंट है सुमित यार. So Inter are not bankrupt. पढ़ के थक गया हूं मैं. Financial problems, yes, but Inter are not bankrupt. ये हम लोग ने कवर किया है in a lot of podcasts with Param, तो आप वो सुन सकते हो on our content. But I will not make Param repeat it. Yeah. It's very technical. I don't mind repeating it, but I think ये purpose defeat हो जाएगा इस एपिसोड का. और बहुत टेक्निकल चीज है फाइनेंशियली. एंड निधि भाई आपके क्वेश्चन पे आने के लिए टू काउंटर, और आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द एटलेटी पर्सपेक्टिव कि उनके लिए जीतना जरूरी क्यों है. ही प्रियांशु मेड अ लॉट ऑफ वैलिड पॉइंट्स and it's a fair argument because knockout tournament में I mean there is a chance for everyone to reach the final and win the trophy. Last year जब draw हुआ था लोगों को लग रहा था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस नापोली फाइनल होगा, बट इंटरनली समथिंग टोल्ड मी, माय गट फीलिंग टोल्ड मी दैट इंटर इज रीचिंग दैट यूसीएल फाइनल बिकॉज हम पीपल वर स्लीपिंग ऑन अस डिस्पाइट आवर बैड लीग फॉर्म. अभी ये सीजन में कैसा है, स्पॉटलाइट हम पे ज्यादा है. नाउ व्हाई विल आई मेक एन आर्ग्यूमेंट दैट इंटर इज द वन दैट हैज एवरीथिंग एट स्टेक. नाउ जैसे प्रियांशु ने बोला इंटर आर विनिंग ट्रॉफीज एवरी नाउ एंड देन, एक तो ट्रॉफी आ रही है हर एक सीजन, ठीक है. बिफोर कॉन्टे वो हो नहीं रहा था. अभी यू कैन से दैट इंटर आर टेकिंग स्टेप्स टू रीच दैट टॉप लेवल एंड टू बी कंसिस्टेंट देयर. हम लोग वो लेवल पे अब पहुंच गए कि अभी हमारे लिए एक ट्रॉफी एटलीस्ट एक सीजन में जीतना एक नॉर्म बन गया और वो हमें कंटिन्यू करना है. व्हाई? ए फाइनेंशियल सिचुएशन, अगेन आई एम नॉट डेल्विंग इनटू इट, बट जितना आप ट्रॉफीज जीतो उतना पैसे आता रहेगा, आपकी उतनी विजिबिलिटी बढ़ती रहेगी, आपके नए फैंस बनते रहेंगे. एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैज देयर ओन रीजन टू सपोर्ट अ क्लब. ट्रॉफीज हो ना हो, बट आपकी नई लीजन ऑफ फैंस आते रहेंगे. आप सुपर कप जो अभी सऊदी अरेबिया में हुआ था, सुपर कोपा इटालियाना,
Inter was the only club that sold out every game. Napoli didn't, Fiorentina didn't, Lazio didn't. पूरा stadium Inter fans से ही भरा था. To my point of creating new fans or bringing new fans on board. A. Two, not just finances, आपको club पे glory add करनी है, आपको वो trophy count बढ़ाना है. 2018 तक literally, like I have been an Inter fan since 2003. I've seen highs and lows. I've seen my club finish 9th in the league table in the banter era. I've seen below average players come and go. यही time है, with the right management, with top players coming in, कि आप ट्रॉफीज जीत सकते हो. बाद में आपको पता नहीं, आप जब ओनरशिप बदलेगी, मैनेजमेंट बदलेगी, अज्यूमिंग 2027 में जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद पता नहीं वेयर इंटर विल गो. वो तब का तब देखा जाएगा, राइट. आप अज्यूम करते हो करंट फॉर्म पे कि सब ठीक जाएगा, बट देयर इज नो गारंटी 2027 के बाद या 2027 ऑनवर्ड्स क्या होगा. तो व्हाट इज द राइट टाइम फॉर इंटर टू विन नाउ? I mean, there will be some AC Milan fans in the chat, and this is no disrespect to them, but right now, जो हम डार्बीज जीतते जा रहे हैं one by one, as and when the derbies come, the trophies are coming more on our side. आपको वो साइकिल बनाए रखना है. I mean, ये प्लेयर्स को, आपको लॉटारो मार्टिनेज लोग बैलेंड डॉर बोल रहे हैं. How will he win it if he keeps accumulating the trophies? ठीक है, वर्ल्ड कप के टाइम उसकी इमेज खराब हो गई कि अरे हाँ उसने कुछ नहीं किया, बट people forget that he was dealing with an injury. He was not fit. उसकी बहुत बड़ी इंजरी थी which needed a surgery. How does he recover his image by winning trophies? UCL final we reached with a weaker squad last season. तो ये सीजन अगर stronger squad है तो वही रीजन तो है बिलीव करने का कि ठीक है, path is more difficult. Obviously Atletico Madrid are much more difficult to face than Porto. But again, अगर आप ये साइकिल में ट्रॉफीज ऐड नहीं करोगे, जब आपका मैनेजमेंट बराबर फंक्शन कर रहे, जब आपके प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास है, जब आप लुक्रेटिव वही 2010 के स्टेटस पे पहुंच गए हो जब आप ट्रेबल जीत रहे थे, नहीं तो आप कब करोगे ये? दैट इज द मेन थीम ओवर हियर फॉर मी. आई मीन, आपके प्लेयर्स रहना चाहते, आपके प्लेयर्स नहीं छोड़ना चाहते, उनको आप कैसे बिलीव करोगे? आई नो सम प्लेयर्स वांट अ डिफरेंट चैलेंज व्हेन दे विन इट ऑल, वो एक अलग पॉइंट है, बट व्हाट will give them the confirmation that you are back to being one of the best clubs in the world consistently? How do you retain your coach Simone Inzaghi? As of now he wants to stay, but उसको आप रिटेन कैसे करोगे जब आप उसको प्रॉपर साइकिल प्रेजेंट करोगे, विनिंग साइकिल प्रेजेंट करोगे? व्हाई डिड कॉन्टे लीव? ठीक है, चलो कॉन्टे थोड़ा ड्रामा करता है, कॉन्टे नहीं छोड़ा बिकॉज ही वांटेड मोर एक्सपेंसिव प्लेयर्स व्हिच वाज नॉट रियलिस्टिक, बट ही वांटेड टू ओपन अ विनिंग साइकिल. दैट्स द की टर्म. वो नहीं, इंटर्स डेफिनेशन ऑफ विनिंग साइकिल अलग था टू व्हाट कॉन्टे हैड इन हिज माइंड. उसके लिए साइनिंग्स थे, इंटर के लिए सेल प्लस साइनिंग्स थे, लो कॉस्ट साइनिंग, स्मार्ट साइनिंग्स. तो आप जो आपके पास जो कोच है सिमोने इंजागी, जो वो है रेडी करने को, तो आप उसको ये गारंटी कैसे दोगे? इज बाय विनिंग ट्रॉफीज नाउ, गेटिंग दैट मनी नाउ. वी क्वालिफाइड फॉर द क्लब वर्ल्ड कप. पैसा उस, सॉरी नहीं भाई, बोलिए, मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ. नहीं, मैं सुन रहा हूँ. आई जस्ट हैव अनदर क्वेश्चन. डोंट वरी, आई हैव पार्क्ड इट, बट यू कंटिन्यू. Sure. So आप क्लब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रहे हो. सिमोने इंजागी हियर ही इज नोन एज द किंग ऑफ कप कॉम्पिटिशंस. आई मीन, निधि भाई आपने भी, आई थिंक when we played you guys, Nidhi bhai, Liverpool, ठीक है, the first leg you guys were way better, I'll admit that. At second leg also you were better, but at least I feel that was the start कि मैंने वो जो 2 लेग लिवरपूल के अगेंस्ट देखे कि मुझे फील हुआ कि हाँ, ये मैनेजर हमको अलग लेवल पे लेके जा सकता है, because we, regardless of however it was, we still won at Anfield where Liverpool was unbeaten at that point for 1 year, if I'm not wrong, at home obviously. Yeah. तो मुझे एटलेटिको ने भी किया है. Yeah, exactly. So मुझे वो तब से कॉन्फर्मेशन आने लगी कि एक नया साइकिल चालू है और ये साइकिल को बनाए रखना है. दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, बाय कीप, यू हैव टू बी डोमिनेंट इन इटली. यू नो, हर एक सीजन जब स्कूडेटो के बाद प्री सीजन प्रीव्यू जो भी करते थे, सब लोग इंटर को फेवरेट डालते थे, एंड वी डिडंट फॉलो अप ऑन इट. एसी मिलान जब स्कूडेटो जीता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर स्कूडेटो, दे वर वेरी स्ट्रांग मेंटली. वी बॉटल्ड अ 9-point लीड द सीजन. ऑब्वियसली यू गाइस नॉक्ड अस आउट ऑफ द चैंपियंस लीग. 9-point lead गई और लास्ट डे पे स्कूडेटो गया एंड एसी मिलान वन इट. ऑफ कोर्स कुडोस टू देम, दे शोड ग्रेट मेंटल परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस, पर वो हाथ का स्कूडेटो गया. फिर नापोली का लास्ट सीजन स्कूडेटो था. सो यू वांट टू हैव दैट कंसिस्टेंट साइकिल व्हेन यू हैव द राइट पीसेस इन प्लेस. This is the best time to do it, and that is my argument as to why this means everything for Inter. Financial तो एक, आपको एलिट्स के साथ उधर वापस आना है. बहुत मीडियोक्रिटी सफर कर ली एज अ डेकेड. मैंने 2003 से इंटर को देखा. I watched Inter choke in the UCL in that decade, basically हर एक गेम में. I mean, आपको भी याद है वो लिवरपूल गेम जिसमें ज़्लाटन ने इतने चांसेस मिस किए और फिर आप obviously you guys deservedly won. जिस सीजन I started watching Inter, AC Milan and Juventus were in the final of the Champions. So I think मैंने as a fan बहुत सफर. I'll come back. Yeah,
जस्ट टू कंटिन्यू कि एज अ फैन मैंने बहुत सफरिंग भी देख लिया, एंड आई फील एक ऐसा रीजन रहता है ना कि आपको आपकी टीम को कंटिन्यू करते देखना रहता है कि आप अच्छा यू वांट देम टू डू वेल कंटिन्यूअसली, बिकॉज वो साइकिल बहुत टाइम से देखा नहीं आपने. 2014 टू 20 नहीं नॉट 2014, 2012 टू 2018 वाज द बैंटर एरा, जहां मेरी क्लब 9th फिनिश कर रही थी लीग में. वाज लूजिंग टू इजरायली क्लब्स, हापोएल बेयरशेवा लूजिंग टू साउथहैम्पटन, फिनिशिंग लास्ट इन द यूरोपा लीग. तो जब आप ये लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है कि आपको यू हैव टू कीप इट गोइंग, और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है स्टेक पे. इट्स जस्ट अ डिफरेंट व्यू कि जब सक्सेस आती रहती है एज अ फैन यू फील दैट सक्सेस हैज टू बी मेंटेन्ड. इट्स अ न्यू लेवल, और वो न्यू लेवल पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंफर्म करना है कि अगर आप एक एलीट क्लब हो या नहीं. बेसिकली दैट्स माय आर्गुमेंट फॉर इट. आई थिंक if I can sure. just answer two questions. I was just going through the chat. So for the ones asking where are you from, Priyanshu bhai, I'm from Mumbai. I'm not from Assam. Someone was telling that आप Assam से हो क्या? So I'm not from Assam. I'm Bengali. So थोड़ा बहुत looks वैसा लगता रहेगा. But I'm from Mumbai. I'm not यार racism नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ. यार I'm just telling कि आपको ऐसा देख अगर के तो लग रहा मुझे भी रहेगा लोग so नहीं. देख के तो मुझे भी लोग तमिलियन बोल देते हैं यार. पर मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. बहुत सारे Sure, sure. लोग एक ये सवाल पूछते हैं, एंड आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम प्रियांशु आल्सो. विद ग्रीजमैन एंड विद लोटारो मार्टिनेज, ये बैलन डोर शॉट्स शाउट्स, एज अ फैन क्या आपको फर्क पड़ता है? मैं आई पर्सनली फील ना, फुटबॉल का जो फैंडम है ना, इट्स वेरी क्लियरली डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स ऑफ पीपल. मतलब मुझे पर्सनली अगर कल के डेट में साला को बैलन डोर मिल जाता है ना, तो आई विल बी हैप्पी फॉर साला. बट एज अ लिवरपूल फैन दैट डज नॉट गिव मी एनी सेटिस्फैक्शन. मतलब मेरी टीम क्या जीती, अगर साला को मिल गया आई विल बी हैप्पी कि उसके लिए बहुत अच्छी बड़ी बात हो गई कि चलो प्लेयर्स विल थिंक कि लिवरपूल इज आल्सो अ क्लब जहां पे जाके आप बैलन डोर जीत सकते हो. क्योंकि हम लास्ट जो बैलन डोर जीते थे वो 2001 में जीते, तो 23 साल हो गए. बट एज अ फैन आई मतलब हैप्पी यस, बट आई डोंट केयर. डू यू गाइस हैव द सेम सेंटिमेंट, या यू थिंक कि लोटारो को, ग्रीजमैन को एक एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर होते हुए, एक इंटर मिलान प्लेयर होते हुए वो रिकॉग्निशन की जरूरत है? देखो निधि में मेरा ये पर्सपेक्टिव है ना, आई आई थिंक आई एम प्रीटी थोड़ा लाइक मिक्स्ड है आपके व्यू से, और थोड़ा अलग है इन द सेंस कि एक अच्छा लगता है कि आप अपने प्लेयर को जीतते हुए देख रहे हो इफ दे विन द अवार्ड, बिकॉज क्योंकि वी लिव इन अ डे एंड एज इन फुटबॉल वेयर लोग है ना थोड़े मैचेस देख के जज कर लेते कि ये प्लेयर अच्छा है या ये प्लेयर ट्रैश है या प्लेयर वर्ल्ड क्लास है. ठीक है, अभी फॉर मी अगर मैं लौतारो के इमेज से देखूं मैचेस प्योरली, मैचेस सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैचेस कहाँ देखते हैं? रील्स पे देख के फैसला हो जाता है. एग्जैक्टली, सॉरी दैट्स हाँ. बेटर. तो लोतारो का क्या है ना, वो वर्ल्ड कप ने उसकी इमेज खराब कर दी विदाउट मेनी पीपल हैविंग टू डेट. मैं आजकल कमेंट्स देखता हूँ नॉट नोइंग कि वो बैडली इंजर्ड था, ही एक्चुअली नीडेड सर्जरी, उसने डिले किया सो दैट ही कुड फोकस ऑन इंटर और ड्यूरिंग द सीजन एंड सो दैट ही डजंट मिस द सीजन. वो लोग भूल जाते पूरी तरह, उसको बाद में सर्जरी करनी पड़ी और वो सब. तो इस जब मैं ये सब पढ़ता हूँ, फॉर मी इट इज, मुझे अच्छा लगेगा अगर लोतारो बैलन डोर जीतेगा, बिकॉज आई एम हैप्पी फॉर हिम एज यू सेड नीति भाई, बिकॉज लोग विल फाइनली सी हिज ग्रोथ एंड हाउ कंप्लीट ही इज, नॉट जस्ट ब्लाइंडेड बाय दैट वन वर्ल्ड कप व्हिच कंप्लीटली टार्निश्ड हिज इमेज. ठीक है, एंड ऑब्वियसली उसने नहीं किया उस वर्ल्ड कप में अगेन, बट ही वाज इंजर्ड, वो क्या करेगा? आई मीन व्हाट विल ही डू? सो ट्रू. on a personal level मैं खुश रहूंगा if he wins. I know that will also get some eyeballs on Inter as a club, but मेरे लिए ना ये अवार्ड्स बहुत पीआर अवार्ड्स है. आई वोंट गेट इनटू व्हाई आई फील दैट और ये वो, बिकॉज ऑब्वियसली वो फिर No, no, एक अलग I agree with you. First of all, I agree with you. But please continue. हाँ, वो एक अलग डिस्कशन होता है, वो अलग रेल्म हो जाता है डिस्कशन का. बट आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड दीज अवार्ड्स इन जनरल for a long time, again from the time I've consumed football, from when I've got an understanding of the game before 2010s, मेरे लिए हमेशा ये पीआर अवार्ड्स है, बिकॉज बहुत बायस होता है जब आप वोट्स देखते हो किसने किसके लिए वोट किया. when you see some names at first place, you're I mean समझ में नहीं आता क्या रीजनिंग पिक किया इस बंदे ने, लाइक एंड ओनली आई मीन यू नो हु कैन वोट फॉर इट एंड ऑल दैट. सो मैं आई मीन ओवरऑल मैं इन अवार्ड्स पे इतना ये इंपॉर्टेंस नहीं डालता हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये सेटिस्फैक्शन है ना, मेरा प्लेयर अच्छा कर रहा है, मुझे पता है काफी है. जिसको अगर कोई मुझसे समझना चाहता है कि क्यों, व्हाई डू यू थिंक दिस प्लेयर इज गुड और व्हाई डू यू थिंक दिस कोच इज गुड,
If they're truly willing to understand, I can explain. But there are a lot of ignorant people out there जिनको नहीं समझना है, जिनको लगता है सिर्फ only 2 या 3 प्लेयर है, रील्स देख के जैसे आपने बोला कि यही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसलिए मैं इन अवार्ड्स को इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ पर्सनली. अगेन जस्ट टू रिपीट कि अगर लौतारो जीते मोर देन हैप्पी, बट ऑन अ बिगर स्केल जैसे आपने बोला निधि भाई, doesn't bother me because again it's a big PR work and everything, and this is nothing to take away from the players who have won it. It's how the awards are conducted and the voting that goes behind it and the bias that goes behind it in certain situations. So मेरे लिए वही, अगर लौतारो जीते खुश, नहीं जीते तो भी ठीक है, मुझे पता ही है कम leaps and bounds, he's the captain of my club, he's done more than enough. For me, मेरे लिए ज्यादा important है, more than him winning the award is him staying. That's my award. Him renewing his contract, that's my award. that's your award. Exactly. मतलब Exactly. देख So, पर्सनली मैं एक स्टेटमेंट, मतलब ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बट मैं आई थिंक गोल्डन बूट्स आर अर्नड एंड बैलन डोर इज वोटेड फॉर. नॉट टू से कि बैलन डोर, देखो अब मेसी रोनाल्डो से आप नहीं कंपेयर कर सकते. वो वैसे प्लेयर्स दोबारा हम अपने लाइफ टाइम में देखेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता. मैं मेसी रोनाल्डो को हमेशा इस कॉन्वर्सेशन से अलग रखता हूँ. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विद बैलन डोर्स कि फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इट्स वेरी अनलकी कि वो उस टाइम पे अपनी फुटबॉल खेल रहे जब मेसी रोनाल्डो अवेलेबल है. तो मेसी रोनाल्डो जैसा अब आज भी बोलते हैं कि अगले 50 साल का मेसी रोनाल्डो, अगले 20 साल का मेसी रोनाल्डो कौन होगा, राइट? इट्स अ वेरी वियर्ड, एंड मतलब उनकी बात अलग. बट प्रियांशु, डज इट अनॉय यू व्हेन ग्रीजमैन, ही इज अ प्लेयर जिसने लीग नहीं जीता आज तक, राइट? जो एक साल एथलेटिको ने लीग जीता उसके करियर में, उस टाइम वो बार्सिलोना में खेला. बट राइट, he's won the World Cup, Yeah. right? Yes. So same with Lautaro Martinez. Do you think कि for you, first of all, are do these awards are that important for you, और तेरा ओपिनियन अलग है? नहीं, वो जीतेगा तभी मैं, मतलब I will consider that. What do you think? So I will just touch upon something that you said कि Messi Ronaldo वाला era था, but I feel that somewhere down the line even Ronaldo had to face all those adversity situations wherein जो PR game था Messi का at that point sometime it was quite strong. रोनाल्डो पर जब फेक रेप एलिगेशंस लगे थे, वो सीजन उसका हैम्पर हुआ था. Let's He not could get not into win that. the Let's not get into that. yeah. So Let's not I'm get. talking about that only. It's a हाँ. pure PR game है ये. And voting at the end of the day कैसी होती है, everyone knows. You both rightly pointed out कि कुछ votes ऐसे रहते हैं, even everyone gets shocked whenever they see that name at the top and they start to think कि क्या reason हो सकता है कि इस बंदे ने इसको ऊपर रखा है. So that is something which is very shocking. But still at the end of the day when you see Ballon d'Or का एक अलग stature बन चुका है. People talk very highly about the award. Yeah. So people talk very highly about the award. There have been quite some legends who have won the award in the past. Mr. Ronaldo, alag level. You have got your Zidane's, Kakas, who have won the award, who have graced this beautiful award. So I feel that Griezmann has deserved this award in the past 1 or 2 years. I won't get into much banter with with anyone on the panel and with the guys. Let's concentrate on Griezmann. Yeah, with Let's the guys concentrate commenting. on Griezmann. Yeah. So I feel that he should have won. 2016 से 18 वाला जो पीरियड था ग्रीजमैन का बहुत सही था वो. 2018 में I personally feel Modric से ज़्यादा I feel that Griezmann should have won it. He contributed very heavily to France's success in the World Cup. Not only did that, he contributed to our success in winning. I guess we won 2 trophies that season. One was Europa and other one was a cup trophy, if I'm not wrong. So Griezmann had done that during that patch. Then again, I mean last season he had the highest GNA in the league, goals and assists, which is in the league. But then at the end of the day, when the rankings are published, I expected him to be at least in the top 15. But when you see Griezmann outside of the top 20 in the Ballon d'Or rankings, you just need to question yourself that what has this award become now? Where has this the stature of this award has fallen down to? Because it was See, Jitu bhai even he rightly mentioned that he was grossly overlooked. He deserved a top 10 finish, and with those kind of stats,
you will have players finishing even in the top 5, Nidhi bhai. I'm telling you that. Because having Hmm. 30 plus GNA in the league, having a 40 plus GNA season, irrespective of whatever trophies जीते हो तुम कि नहीं जीते हो, a top 10 finish is mandatory. You can't overlook that, but he's getting overlooked right from the that 2016 to 2018 wala patch or फिर last season भी. So I feel that personally for him, whenever I see his interviews and everything, the thing that talks about mainly is his love for Atletico and how he just got carried away a bit in the middle and went to Barca, and he passed on some comments against Atleti. So he apologized for Hmm. that, and he was like, "Ki, my ultimate achievement will be, the day when I last walk through that tunnel of the Metropolitano, and the fans chant my name and bid me a proper goodbye." Because he was very much booed when he came back in the 2022 season. That shock transfer from Barca, that loan Hmm. move, which eventually transpired into a final, move, permanent transfer. So he said that after that in many interviews that his final, his main achievement or main goal is that to get that respect and to get that emotional attachment from the Atleti fans when he last walks away from the game or walks away from Atleti, goes down that tunnel of Metropolitano. So even I feel that irrespective of whether he wins or Ballon d'Or or anything, any award, individual award, I really don't care about it now because whatever I have seen for the past, whatever has been going on from the past 2 3 seasons, there have been many Hmm. deserving candidates who have lost on the awards, and I have completely moved on from them. I don't feel the need to count them as something great. The only thing I'm concerned about, the only awards that I'm concerned about is the Lev Yashin Trophy and the Pichichi, which is completely given to the best striker and the best Yeah. goalkeeper, because this game has very much overlooked the defenders for a very long time, and same goes to the midfielders. So you can't help but state the fact that they won't be favored anymore in the future also, given the fact True. that it's pretty much the attackers game, and even the goalkeepers were overlooked up until the Leva Yashin Trophy came. So I'm only concerned about these two trophies, and nothing more than that. At the end of the day, it's just the love for the player, and the love that the player possesses for the club. You see that, and you fall in love with that particular player. So I am very much very much a fan of Griezmann, and I would love to see him win a trophy more than an individual award with Atleti. Fair enough. Fair enough. भाई लोग 5-10 मिनट में खत्म करेंगे Sure, sure. बिकॉज Sure, यू नो sure. इट्स क्वाइट लेट एंड पीपल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक यू सो मच यार परम शॉर्ट No, no. नोटिस पे प्रियांशु इतना लेट रात में टाइम देने के लिए बट कमिंग बैक टू द गेम यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से बोल रहा हूँ 350 लोग हमको देख रहे हैं वी आर वेरी क्लोज टू 24,000 मैं Yeah. एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ वी आर 70 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम Oh, 24,000 ठीक है yeah. तो 24,000 हमारे हो सकते हैं आज तो पता नहीं बट ये महीने का टारगेट अपना 25,000 का है यार तो अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आ Jeez. रहा है अगर आप लोग साथ दोगे तो वी कैन गेट टू 25,000 और साथ साथ Exactly. बोथ दीज जेंटलमैन हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ टाइम थैंक यू सो मच तो इनके दोनों एथलेटी इंडिया एंड इंटर इंडिया दोनों का जो इंस्टाग्राम लिंक है वो मैंने डाल दिया है कमेंट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाइए फॉलो करिए कमिंग बैक टू द गेम बॉयज वन क्वेश्चन Hmm. आई हैव अ फीलिंग अगर इंटर पहले स्कोर कर देता है Hmm. द टाई इज डन Yeah, even I have that feeling. Same. I will agree on this point. Yes. आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एथलेटिको मैड्रिड कैन नॉट लेट फर्स्ट हाफ में इंटर मिलान को टू स्कोर नील नील रहे चलेगा ठीक है इट कैनॉट बी 1-0 और मतलब 2-0 में तो खैर बहुत ज्यादा ही हो जाएगा बट मैं प्रियांशु तेरे से पहले पूछूंगा यार तू 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 अग्री करता है इससे डू यू थिंक इट्स डिफेंड फर्स्ट एंड देन अटैक लेटर और डू यू थिंक कि लेकिन तूने बोला कि शुरू के आधे घंटे में गोल मारो Yeah, see, because I completely feel that starting at 30 minutes, Inter will be complacent. They will, हम्म look to just get settled into the game, into the atmosphere. So कोई भी अवे टीम कभी भी आता है, इतना बड़ा स्टेज है, अटलेटी हम्म जैसा टीम सामने है उनके. I'm not singing laurels about my team. I'm just stating some facts, which is the common
You thinking can sing about it. laurels about Yeah, your team. You can sing yeah, laurels about your team. That's what a yeah. fan is. So हाँ, yeah, so why कि 30 minutes, first 30 minutes, every team takes to settle down, and that is the moment wherein we can strike, and we have done that at home this season. First 30 minutes we have scored, एक गोल तो मैंडेटरीली स्कोर किया ही है. We have scored हम्म, 2 goals. We have finished some games also. जैसे लास्ट पाल्मास वाला गेम, पहले 30 मिनट में 3 गोल मार के खत्म. दो हम्म, यूरेंटे, एक कोरिया, बात खत्म उधर ही. सेकंड हाफ देखो ही मत, जीतेंगे कैसे भी, 3-2 तो जीत ही जाएंगे. सो दैट इज द हाँ, थिंकिंग कि पहले 30 मिनट में गोल करना ही है. बिकॉज इफ वी आरंट एबल टू स्कोर इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, then हम्म, then the thing is, then it becomes completely about just somehow getting to score that one goal, and just हम्म, taking the game deep, because उसके बाद इंटर सेटल हो जाएगा एक बार. So they have got quality defenders, they have got quality fullbacks, they have got quality wing backs, सब quality उनके पास है. So they can pretty much see the game out even at 1-0. They have got the same quality as Man City had during that season, wherein they saw out that 1-0 lead that they took away at the Etihad. They came to Metropolitano and वही हुआ, 0-0 finish हुआ. So even Inter have that same quality. I will also say that Inter have the quality to increase the lead if we at any time get a bit ऐसा ऊपर नीचे हो गया कि complacent. अभी थोड़ा कंप्लेसेंट हो गया अभी, कि अभी चलो थोड़ा स्लो कर देते हैं गेम को, थोड़ा पेस हम लोग ये करने, नहीं वैसा नहीं कर सकते, बिकॉज इंटर हैज द पे हैज हैज द क्वालिटी टू डिक्टेट द गेम ऑन देयर टर्म्स. बट सिंस दिस इज एन अवे गेम, वी विल हैव दैट एज, होम एडवांटेज का एज रहेगा, एक होम फॉर्म का एक एज रहेगा, और फर्स्ट 30 मिनट्स का जो स्टैट है उसका एक एज है हमारे पास. सो आई प्रेटी मच फील फर्स्ट 30 मिनट स्कोर करो, एटलीस्ट एक तो मारो ही मारो. उसके बाद बैठना है बैठ जाओ, डोंट गेट अप फ्रॉम द प्लेस ओनली, सीधा पेनल्टीज के वक्त खड़ा होना, कीप डिफेंडिंग फॉर योर लाइव्स. और इस फर्स्ट 30 मिनट्स में दो मारो, फिर 30 मिनट्स में ही जो डिसाइड करवाना है अपने लिए करवा लो, टाई उधर ही खत्म करो. Because I'm being an Atleti fan, and if anyone has watched Atleti games, I'm sure कि निधि भाई आप लोगों ने भी Atleti games कभी ना कभी कोई ना कोई तो देखी होगी आपने, जैसे देखते हैं यार, लिवरपूल. ऐसी क्या बात? नहीं नहीं, नहीं यार, ला लीगा देखते हैं ना, ऐसी क्या बात है? बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि Atleti के गेम्स कौन देखता है. सो मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर आपने देखे इसलिए रहेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ सो कि their style क्योंकि has changed, इसलिए. हाँ, या सो अथलेटिक गेम्स का जो लेट ड्रामा रहता है, दैट इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, दैट इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, बिकॉज एक्सट्रीम लेवल का ड्रामा रहता है. शिट हाउजरी एकदम टॉप लेवल की रहती है, डार्क टैक्टिक्स, डार्क मैजिक, जो बोल लो आपको, वो ही रहता है अगर गेम आप डीप जाते हो गेम में. सो अभी ये सीजन 2 एक्स्ट्रा टाइम्स खेले हमने रियल मैड्रिड का अगेंस्ट. वन वी लॉस्ट विच वाज द सुपर कोपा सऊदी में, दूसरा जीते थे which was at Metropolitano, Copa del Rey वाला. हम्म, हम्म, So वही है, if we take the game deep, it can either हमारे तरफ भी आ सकता है, उनके तरफ भी जा सकता है. बट वही है, if you ask an Atleti fan, he will pretty much say कि भाई नहीं, रेगुलेशन 90 प्लस इतना एडेड टाइम ऑन रहता है, उसमें खत्म करो गेम, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन 2 एक्स्ट्रा टाइम्स दिस सीजन, एंड हमारा हार्ट वो कंडीशन बेयर करने के हालत में नहीं है, क्योंकि इतने सालों से हम देख चुके हैं वही चीज. सो इफ यू आस्क एनी एथलेटी फैन अराउंड द वर्ल्ड, ही विल से द सेम थिंग कि फिनिश इट इन द 90s. सो आई एम ऑफ दैट थिंकिंग ओनली कि फर्स्ट 30 मिनट्स बहुत अच्छा टाइम है, खेलो, मारो, खत्म करो. चलो, एक चीज बस लास्ट पूछ दूंगा और उसके बाद एक 5 मिनट स्पेंड करेंगे, क्योंकि आज एक दूसरा मैच भी है, उसके बारे में भी उसका थोबड़ा भी डाला है मैंने थंबनेल में, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. बट प्रेडिक्शंस बॉयज, आई विल स्टार्ट विथ यू परम, एंड कमेंट्स में भी यार बताओ हमको प्रेडिक्शन. हाँ आई निधि विल भाई, आई स्टार्ट विथ थिंक, यू. हाँ तो आई थिंक जस्ट टू कीप इट ब्रीफ, मुझे लग रहा है अगेन जैसे प्रियांशु ने अपने टीम के लिए केस बनाया है, आई फील अगेन आई ट्रस्ट दिस टीम अ लॉट मेंटली और टैक्टिकली बहुत. सो आई थिंक वेयर हम लोग ने बहुत गेम्स खेले जहां हमने हीट फेस की है इनिशियल मिनट्स में, बट वी हैव बीन एबल टू मैनेज इट, सी इट थ्रू एंड देन ड्रैग द गेम अकॉर्डिंगली. अलग अलग फेजेस को अच्छे से हैंडल किया है. आई थिंक tonight's game either ends like a 0-0 or a 1-1, and that's how we go through. I don't think we win because वो स्पेन का रिकॉर्ड, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली ये इंटर ने बहुत रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, बट मुझे लग रहा है वो एक रिकॉर्ड जो स्पेन में जीतने का है वो रह जाएगा, बट ड्रॉ होके वी विल गो थ्रू. आई थिंक वो, आई डोंट थिंक वी विल प्ले फॉर अ ड्रॉ, दैट्स नॉट व्हाट आई एम इंसिनुएटिंग, बिकॉज आई नो माय टीम. आई थिंक
हमारी टीम वो बैलेंस ढूंढने की कि कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, कब वो सेट पीसेस को लाइक बराबर से डिफेंड करना है, ये वो। बट आई फील एंड रिजल्ट रहा होगा उस गेम को बराबर मैनेज करके, और या आई थिंक दैट्स हाउ वी विल गो थ्रू। प्रियांशु, तेरा क्या प्रेडिक्शन है? मैं तो इनके प्रेडिक्शन देख के खुद चौंक जा रहा हूँ। 5-0, वा- 3-1, 3-1, 3-1। भाई इसमें तो एसी अनु मिलान भाई ने बना तो दिया अनु भाई ने तो मिलान को जिता भाई। दिया है। ये तो अरे नहीं, अब अबे चैट अपनी लेजेंडरी, चैट अपनी लेजेंडरी है भाई, यू हैव नो आइडिया। 1-0 Atletico, then minutes, then wins it in pain. Fair enough. I mean, Yeah. people So have apart from that 5-0 prediction, if I'm not wrong, Arnab Roy, sorry, but I don't agree with that 5-0. अरे भाई बस अरे करो। वो करते, वो छोड़ो, वो तो चलते रहता है। चलो अरे नहीं, तो ये but still हाँ, जो ये लोगों ने 5-0 छोड़ के बाकी जो predictions है, I pretty much agree with that. It will be a tight somewhere 2-0 1-0 वाला टाइप ही रहेगा। 3-1 हो गया तो बहुत बढ़िया है भाई, I will accept it, but I will go with a 1-0 or 2-0, and if it's 2-0 we win it in regulation only. 1-0 है तो we'll win it in extra time or penalties. मैं मैं हाँ, मैं अपना प्रेडिक्शन बता देता हूँ, क्योंकि मैं स्कोर लाइन प्रेडिक्शंस तो उतना करता नहीं हूँ। मैं बस एक चीज बोल रहा हूँ, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैच में 2 रेड कार्ड है। ओ भाई 2 रेड कार्ड्स, oh there are 2 red cards in this game is what my prediction is, right? And those red cards could be for one of them could be for Simeone also. This is what I'm No, predicting. I know. if there are red cards in this game, it will be for Atleti for sure. मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं है, इंटर के किसी प्लेयर को नहीं मिल रहा है रेड कार्ड, किसी प्लेयर को नहीं मिल you can never be so sure. भाई लोग चलो एक, हाँ बोल पर। no was not saying. एक और गेम है आज, और उसमें हमने भी थंबनेल में फोटो डाली है, डॉर्टमंड वर्सेस पीएसवी। यार PSV. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है भाई, ये तो मतलब आई नो उधर वन। अच्छा, यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन परम? मेरे को डॉर्टमंड के घर पे पीएसवी, यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? बहुत ब्रीफ रखता हूँ निधि भाई। आई मीन हाँ, ये जो एकदम। आई मीन मैंने दोनों टीम्स को थोड़ा देखा है ये सीजन, एंड फ्रॉम माय नॉलेज आई मीन पीएसवी इन द एरेडिविजी आर कंप्लीट अगेन डिफरेंट बीस्ट टू व्हाट दे आर इन द चैंपियंस लीग। उनका चैंपियंस लीग कैंपेन वाजंट द बेस्ट, और डॉर्टमंड प्री जनवरी विंडो और पोस्ट जनवरी विंडो एकदम अलग है। आई मीन अगर आप देखो मैटसन को साइन करके वो डिफेंस बहुत सॉलिडिफाई हो गया है। निकलस फुलक्रूग स्ट्राइक में जो अच्छा नहीं कर रहा था, सडनली पिक्ड हिज फॉर्म अप, और आई थिंक आई अग्री दैट डॉर्टमंड विल गो थ्रू, बट मुझे लग रहा है थोड़ा क्लोज होगा। आई मीन वो फर्स्ट लेग भी मैंने बाद में देखा था, तो उसमें पीएसवी के पास बेटर चांसेस थे, बट उन्होंने लिए नहीं, और ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल पेनल्टी था। आई डोंट थिंक वो पेनल्टी होनी चाहिए थी पीएसवी के लिए। हुमेल्स हैड गॉट द बॉल फर्स्ट, और उसके बाद टिलमन हैड गॉन ओवर, एंड आई डोंट थिंक वो पेनल्टी होनी चाहिए थी। बट आई थिंक पीएसवी फाइट देगी, बट मैं लाइक निधि भाई लाइक आई थिंक डॉर्टमंड विल गो थ्रू, बट लाइक 1-0 एक्सपेक्ट करो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक मे बी 3-0 या 4-0 ऐसा कुछ। आई थिंक 1-0 क्लोज गेम होगा। दोनों टीम्स के फॉर्म अच्छा है, डिसेंट है, सीजन ठीक चल रहा है। आई मीन डॉर्टमंड हैव कम बैक फ्रॉम देयर बैड स्टार्ट, सो आई थिंक डॉर्टमंड मे बी 1-0 लेके जाएगी। नथिंग बिग हैपनिंग ओवर देयर, लाइक 3-0 वो सब मुझे नहीं लग रहा। दैट्स जस्ट माय व्यू। नहीं, 3-0 तो मतलब 3-0 कौन बोल रहा है, मतलब नहीं जस्ट आई डोंट। जस्ट हाँ हाँ, I think Dortmund will go through, but PSV, देखो क्या बोलता है यार। you can't write PSV off Yeah, again. that's Dutch teams का history UCL में, you know, especially knockout types में away from home, बहुत बहुत अच्छा history है उनका। फेमसली एक गेम याद आता है, अभी रिसेंट का ही है, 2018-2019 टाइम का ही है, आयक्स वाला गेम, when the Ajax, you know, fairy tale run उनका जो था, obviously ended by Spurs out of all exactly. teams, but yeah, they went away to the Bernabeu. तू बहुत पंगा ले रहा है, तू बहुत पंगा ले रहा है। It's not ending. And they somehow got a 4-1 shock result at the Bernabeu. Obviously, Real Madrid was struggling that season. I very much remember कि वो season क्या चल रहा था Real Madrid का, injuries वगैरह के साथ. But still they got a result. And Dutch teams, you can never write them off. PSV have got very quality players in every department of the field. Or famously Luke the Goat,
Luke Barca De fans Jong, he's famously, playing. Luke De Jong. Yeah, Yeah, he's playing well. yeah. So if Dortmund aren't able to defend against Luke De Jong, then I feel I will just go out of the box since you both predicted a Fair enough. Dortmund win. Yeah. So just to be a bit different on the panel on the given day, I will go with a PSV win. I feel that PSV are going to Yeah, take that's this as true. a 2-0 win for PSV. Hmm. Given the fact that Yes, so also Dortmund have looked shaky, they have looked shaky हाँ, at every point in this season. That's true. So yeah, I'm going to go with a 2-0 win for PSV. yes. Sandeep, PSV are not good in their league. They are phenomenal. Yeah. वो they are leading the table और हारे Yeah. नहीं है. PSV are not good. They are Yeah. phenomenal in Yeah. the. आशीष यार, भाई, ये आई थिंक अगर आपका पैसा कटा है तो वापस आ जाएगा मेंबरशिप का. बट जस्ट ट्राई टेक इट अप विद यूट्यूब. मतलब जनरली पैसा वापस आ जाता है जब आपका ऐसा पेमेंट फेलियर होता है. लास्ट क्वेश्चन बॉयज, सिंस यू गाइज आर ऑन यू नो ऑन मेनेस इन द मॉन्क, प्रीमियर लीग कौन जीत रहा है? I, अगर लिवरपूल नहीं बोला तो फिर सोच लेना. no, at least मेरे लिए मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, I mean मजाक कर रहा हूँ. निधि, I will मैं अपने prediction और who I want I will stick to that. I think मुझे जो Yes, please. हाँ, who I want लिवरपूल मैंने बोल चुका है. क्लॉप फील गुड स्टोरी एंड आई एम पर्सनली समवन हु लाइक्स टू सी दीस फील गुड स्टोरीज. थोड़ा क्लॉप के साथ रिलेट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ सिमोने इंजागी स्टिल नॉट विनिंग अ लीग टाइटल एंड फाइनली being in the position to win it. उसको उसके लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है एंड आई नो क्लॉप हैज नॉट वन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स और नाउ दैट ही इज ऑन हिज वे आउट. एंड मैंने जब वो इंटरव्यू देखा, you could see the toll, all those years of work had taken on. Like you get that feeling when you see a person like Klopp थक गया and है. how much he lived Liverpool, not just the game but the club. So from a feel good perspective, again, not just because I'm on the channel, you can go to the previous Serie A panel and see I said the same thing. मैं देखना चाहता हूँ लिवरपूल जीतने को, also because of the injury situation. Still Manchester City का against draw निकालना and maybe could have even won that game. चाहता हूँ लिवरपूल जीते बट मुझे लग रहा है मैनचेस्टर सिटी जीतेगी. I That's what I agree. feel. I think I agree. मतलब I think Man City are the favorites still. I know अभी technically वो third है, but I think Man City are the favorites. Yeah. प्रियांशु तू क्या बोलता है? I will just again go a bit of the पहले ही आता है वो उसका समझ एथलेटिको मैड्रिड. तू एस्टन विला बोलेगा? गौतम गंभीर है तू? नहीं एस्टन विला नहीं. उतना भी ये नहीं, उतना भी डिफरेंट नहीं हो. I will go with I am of the same thought that एक swan style end होना चाहिए क्लॉप के लिए उसका जर्नी लिवरपूल में. Him winning at least either of the Europa or अपना यूरोपा में वो फीलिंग नहीं आएगा रे. यूरोपा में वो बात नहीं. समथिंग मैं एटलेटिक फैन हूँ ना. फॉर मी समथिंग इज बेटर देन नथिंग. सो मेरे लिए चलता है. बट स्टिल कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, if it ends with the Premier League trophy, then I will be very happy for my Liverpool friends and also for Klopp. But I feel that this is Arsenal season. Arsenal का season है ये. They were at the top for the majority last season. They falling just short. It hurts a lot. You ask me, we have fell short twice in the Champions League final. Falling short and hurting a lot. हमसे ज़्यादा कौन जानता है? एक पॉइंट. Right, so एक पॉइंट भी नहीं, वो एक छोटा 1 मिलीमीटर वाला. 1 मिलीमीटर. हाँ वो वाला बहुत है. So anyway, falling short, they fell short, but this season they have fired on all cylinders, and if they are able to continue this thing, then no stopping Arsenal. This is their season. चलो, इससे एक बात तो पता चल गई है, प्रियांशु दोबारा नहीं आ रहा है. मैंने सुना मजाक कर रहा हूँ. I'm just kidding. चलो भाई लोग, यार, by the way, big thank you यार, both प्रियांशु and परमेश्वर. I think भाई, thank you for having us as always, Nidhi bhai. Or please, people, subscribe to the channel. As Nidhi bhai said, there is a goal, and they're giving you content almost every day with their shorts, with their long videos, अलग type के format, not just Liverpool content, अलग content, and अच्छा research content है भाई लोग. Subscribe करो, like करो, share करो, and
Sorry, go ahead, Priyanshu. Yeah, and I feel that the content that Menace and Monk के page से post होता है, it's quite understandable, सबके लिए है. Hmm. It's quite light hearted, कुछ ज़्यादा frantic pace में नहीं चले जाता है. Wherein you delve too much into the stats, or you get heated and start abusing, or banter ज़्यादा हो जाता है. It's very light hearted, and I also expected Manas bhai to be on the live, but I feel that he might be in the studio show tonight. प्रेजेंट कर Right? रहे हैं, Yeah. प्रेजेंट कर Present, रहा हाँ, है yeah. वही. वो. Yeah. So प्रेजेंट कर रहा है. so but yeah, I've met Manas bhai in person. I'm yet to meet Nidhi bhai. So Even I for have met sure, Manas bhai. yeah. So yet to meet Nidhi bhai. So one day for sure. But yeah, Done. as far as I know about Manas bhai, he's a top guy. Very genuine whenever you speak to him. इतना भी नहीं, Uh, इतना भी नहीं. yeah, वो थोड़ा सा चढ़ाने के लिए तो बोलना पड़ेगा. मजाक कर रहा हूँ. But the first time when I met him in person, I did not hesitate while mentioning him the remontada type of match that we had at Anfield 2019 Morata season wala. Yeah, and the first reaction I got from him is not worth mentioning over here because it was something vulgar. But yeah, both of them are gentlemen, so please subscribe to the channel, and as he rightly said, 70 subscribers बाकी है. So भाई आज ही करवा दो, हो सके तो अभी जितने देख रहे हो करवा नहीं रहेगा तो कर दो भाई फटाफट से. आज And Atleti India का लिंक है नीचे, so just go Yeah, and follow प्लीज the फॉलो page. करो. Yeah, Inter so Club we India are को we are a भी follow growing we are a growing Peña in India. Obviously secondary to Real Madrid and Barca obviously, but still we are growing. And if you are a supporter of the club and you did not know, because there are a lot of fans who are reaching out to us recently कि नहीं पता था है करके Peña. So हाँ, please same. just go and follow the page, and then we'll just converse with you with the DM, and we'll get you added to our WhatsApp group as well, wherein we have a very large family of fans wherein we talk, breathe, and everything about Atleti. So yeah, finally, thanks a lot, बिल्कुल Nidhi bhai. करिए, Thanks a बिल्कुल lot. करो यार. लेट्स ट्राई टू Same गेट for आउट लाइव. same for यस yeah. परमेश. No, just shortly. Same for Inter. You can follow my handle. It will link you to the Twitter handle of Inter Club India as well. And just like Priyanshu said, we also have a big group where we again breathe Inter, talk Inter, everything most of the time. तो अगर आपको Inter के बारे में जानना है, follow करना है, you can follow me or just the Instagram handle निधि भाई ने जो लिंक किया. Thank you निधि भाई. Same. बिल्कुल Same. यार, मैं वही बोलूंगा कि प्लीज फॉलो करिए. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर फुटबॉल बियॉन्ड लिवरपूल, मैन सिटी, मैन यूनाइटेड, चेल्सी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना. उसके आउटसाइड भी फुटबॉल एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स हैपनिंग. वरद यार, 25K पे डांस नहीं करूंगा, डांस मैं 50K पे करूंगा. 25K पे गिव अवे जरूर करूंगा, चलो ये पक्का. ठीक है, 25K पे गिव अवे हो जाएगा. डांस 50K पे और 100K पे हम दोनों डांस कर लेंगे. चल डन, ये आई गारंटी. बट ठीक है, बट थैंक यू सो मच यार भाई लोग. थैंक यू सो Thank मच you यार, निधि भाई. इतना Thank you. टाइम देने के लिए. 1.5 घंटे बात किया हमने, बहुत मजा आया. और यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, इन दोनों के चैनल्स को फॉलो करो. मैं परमेश्वर का भी पर्सनल अकाउंट का लिंक डाल दूंगा. मैंने पर्सनल नहीं डाला बिकॉज आई डिडंट आस्क देम कि डालूं कि नहीं. That's तो fair. बट I'll put it. So please follow these two gentlemen. एंड बाकी मजे करिए यार, एंजॉय करिए. आप बहुत सारा फुटबॉल बहुत अमेजिंग होने वाला है. और कल द बिगेस्ट कंपटीशन इन वर्ल्ड फुटबॉल हैपेंस. तो Yeah. कल मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए शॉट के साथ और एक नए लाइव के साथ. मजे करिए, एंजॉय योर डे, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स. Thank you guys. Okay. Thanks a lot.